Hi friends and welcome back to Skillbus. I am Navya and today's video is about mutual funds. आज के वीडियो में I'll tell you कि basically mutual funds होते क्या हैं and a lot more about them. इतना हम सबको पता है that they are something related to investments, but today we'll know in detail about them. So let's start now. So the first question is that what are mutual funds? Mutual funds होते क्या हैं? So, mutual fund is an investment fund which collects investment from a lot of investors and invests it into different securities. Mutual funds financial experts handle करते हैं जो उस मनी को investors के invest करते हैं in shares, bonds, debentures and other assets. अब ये जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं इनका एम होता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने कलेक्ट करी है इन्वेस्टर्स से उस इन्वेस्टमेंट्स पर ये कुछ कैपिटल गेन्स प्रोड्यूस करके दें इन्वेस्टर्स को. Now you must be thinking that how are these brokers earning then? They make money through sales charges that work like commissions and also they charge investors a percentage of assets under management. Now the next question is कि mutual funds इतने popular क्यों हैं? You must have seen advertisements on TV about mutual funds. So the reason behind their popularity is that people prefer to invest in them because they get exposure to an expert managed portfolio. Apart from this, people also get their portfolio to be diversified. खुद से जब यूजुअली लोग इन्वेस्ट करते हैं तो ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर पाते बट व्हेन एन एक्सपर्ट इज हैंडलिंग देयर पोर्टफोलियो इट लीड्स इनटू डाइवर्सिफिकेशन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई शुड वी इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स. इसके बहुत सारे रीजंस हैं एंड आई विल टेल यू सम ऑफ देम. पहला रीज़न है दैट वी गेट एक्सपर्ट हेल्प. म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके हमें एक्सपर्ट हेल्प मिल जाती है बिकॉज आर पोर्टफोलियोज आर हैंडल्ड बाय फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स सो दे नो बेटर देन अस दैट इन्वेस्टिंग इन व्हाट ऑल विल ब्रिंग ग्रेट रिटर्न्स. द नेक्स्ट एडवांटेज इज द SIP सिस्टम. SIP स्टैंड्स फॉर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. इसका मतलब है कि म्यूचुअल फंड में हम स्मॉल अमाउंट्स के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं रेगुलरली. आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप उतनी फ्रीक्वेंटली अपनी SIP शेड्यूल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई वॉन्ट कि मेरी SIP मंथली जाए या क्वार्टरली जाए और फॉर दैट मैटर बाय एनुअली देन इट्स अप टू मी एंड देयर आर नो बाउंडेशंस. हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितने अमाउंट की SIP करनी है. ये अमाउंट बस एक मिनिमम इन्वेस्टेबल अमाउंट से ज़्यादा होना चाहिए. द नेक्स्ट बेनिफिट इज फ्लेक्सिबिलिटी. Mutual funds provide flexibility as we can enter and exit them at any time, which might not be the case with most other investments. The next point is the lock-in period. Mostly mutual funds में कोई भी lock-in period नहीं होता, but on the other hand, most of the other types of investments have a lock-in period. Mostly mutual funds come with different exit loads on redemption. The next point is goal-based funds. ये point बहुत important है because a lot of people consider it. Mutual funds हमें plans के options देते हैं to meet our short-term and long-term financial goals. हर इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो हैज स्कीम्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफाइल और स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट. द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेज इज दैट हाउ कैन समवन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स. इसके 3 वेज हैं. या तो आप ऑफलाइन किसी भी AMC विच इज असेट मैनेजमेंट कंपनी में जाकर अपना KYC करवा के ये कर सकते हैं. दे विल प्रोवाइड यू विद डिफरेंट प्लान्स एंड यू कैन चूज दैट विच प्लान यू वांट टू गो विद. द सेकेंड ऑप्शन है ऑनलाइन थ्रू AMC. इसमें भी आप AMC के थ्रू कर सकते हैं इन्वेस्ट बाय गेटिंग योर eKYC डन. द थर्ड ऑप्शन इज ऑनलाइन थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. रिसेंटली बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं टू हेल्प पीपल इन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स. सम ऑफ द ब्रोकर्स इन इंडिया ऑफ म्यूचुअल फंड्स आर एंजल ब्रोकिंग, HDFC सिक्योरिटीज, कोटक सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल, SBI कैप सिक्योरिटीज, Axis Securities, IIFL Securities, and there are a lot more which you can check. So that was from my side about mutual funds. I hope you all liked the video. Also, I request you all to subscribe to our channel and press the bell icon so that you get the regular updates. Thank you.